Hello friends, how are you all doing? We are back with another video. Okay, so I know it has been a really long time that I have not made any videos. I accept it, but today is the day and we are back. Technically I'm back, okay. So today I just got received this packet from Blue Dirt, and this is me. Okay, let me just keep it like a surprise for you guys, because I know what's inside. But first of all, let me thank my brother for this, because he just made this purchase for me and sent it to me right from Canada, because he's in Canada right now, and it's my gift for this Raksha Bandhan. And if you don't know what Raksha Bandhan is, so it's an Indian festival where it says about the brother-sister bonds, but it's nothing like a brother-sister bond between me and my brother, because it's like we belong to that bro squad. Yeah, so but still he just sent me this very lovely gift. So thank you so much, brother. I just loved it, and no words for it. And yeah, it's cool, man. Okay, and someday I'll also send you a gift, but it will be a Tesla or a Bugatti Veyron probably. Okay, so let me just now unbox this, and yeah. So guys, I just opened it, and this is fully bubble wrapped. So thumbs up to the packaging. Whoa! So guys, I just opened this, and I just received this, and here is the bill, and it's for 1299, so it's like about 1300 rupees. So दोस्तों, it's a really good price. Okay, so इसमें दो वर्जन थे. जो पहले MI ने बैंड निकाला था वो था MI बैंड 2, जो था वो 2000 के आसपास कुछ था, और अभी जो उसका प्राइस लगभग 1700 हो गया है. और ये जो है वो है गाइस मी HRX वर्जन. पहले इसकी देख लेते हैं कि कैसी इसकी दी गई है. इट्स रियली cool and the packaging is really nice. MI Band HRX Edition. So don't think कि ये कुछ heart rate sensor के साथ आता है. No, this version doesn't come with that heart rate sensor. It's Hrithik Roshan version. I don't know why, but yeah, it's Hrithik Roshan version. So yeah, MI Band Hrithik Roshan version, and this is that version. And MI Band 2 और इसमें कुछ भी difference नहीं है लगभग, but इसकी battery life ज़्यादा है, and because MI is claiming that this band is coming with, I think, 20 to 25 day battery life, whereas the older one, the MI2 band, was just giving a battery life of, I think, 20 days or like 15 to 20 days. Okay, and that was for 2000 rupees. But the difference is only that कि इसमें heart rate sensor नहीं है और उसमें heart rate sensor था. Otherwise the strap is also like really similar, and जो capsule आएगी वो भी काफी similar होगी. So let me just unbox this now. गाइज, इसकी पहले तो कोई बेसिक डिटेल्स अगर मैं आपको बता दूं तो वो ये है कि फर्स्टली इफ यू कैन सी, तो इसका प्रोडक्ट नेम अगर भले ही HRX एडिशन है, इट्स MI Band 2i, कलर ब्लैक, नेट क्वांटिटी 1 यूनिट, एंड बैटरी कैपेसिटी आप देख सकते हैं 70 mAh, एंड बहुत अच्छी बात है, इट्स वाटर रेजिस्टेंस. ओके, एंड दूसरी बात है कि इट कंटेन्स एन MI Band स्ट्रैप, charging cable, user guide, and device requirements में आप देखिए कि this is compatible with all MI Xiaomi phones, and it's compatible with all other iOS and Android. Okay, and the another important thing is कि that इसके लिए आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करना पड़ेगा. सो आपका फ़ोन और मतलब ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू हैव दैट MI फिट ऐप. ओके, सो वो मैंने ऑलरेडी कर ली है इंस्टॉल अपने फ़ोन में. सो वो मैं करके दिखाऊंगी आपको, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. सो गाइस, हमने ये ओपन कर लिया है, और जैसे आप देख सकते हैं ये इस तरह का बॉक्स आपको मिलता है, और इधर हमको मिल गया है हमारी MI HRX वर्जन मी बैंड. और पहले हम देखते हैं, तो पहले हमको कैप्सूल दिख रही है यहाँ से, तो पहले मुझे इसको
निकालना पड़ेगा। सो ये हमने ये ओपन कर लिया, तो इधर हमको मिल रही है ये कैप्सूल। इसके साथ अगर देखें तो ये है हमारा स्ट्रैप, और इसके साथ हमको मिल जाता है एक चार्जिंग केबल, जिसके आप अपने ही कोई अडेप्टर के साथ कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। और तो मैं आपको इन सब को कंप्लाई करके दिखाती हूँ। ओके, और हाँ, इसके साथ आपको मिलती है एक यूज़र गाइड, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, हमें इसको असेंबल करना पड़ेगा अब, तो इसको मैं थोड़ा चार्ज कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ।